Welcome to all of you. So we are in the ninth lecture of the chapter acids, bases and salts. In the last two lectures we discussed about salts, formation of salts, family of salts and the pH of the salt solution. In this lecture we'll start with common salt. And then in the upcoming lectures we'll discuss some important chemicals obtained from common salt, such as baking soda, washing soda, caustic soda. Apart from these compounds, we will also discuss about bleaching powder and plaster of Paris in this chapter. Let's start this lecture with sodium chloride, common salt. What is common salt? Chemically common salt is सोडियम क्लोराइड. फॉर्मूला क्या होता है? NaCl. तो जो हम साल्ट घर पे यूज करते हैं ना, वो साल्ट कौन सा है? इट इज कॉमन सॉल्ट. सो कॉमन सॉल्ट इज सिंपली कॉल्ड जस्ट salt. Here, and it is also called table salt. Why? Because it is used as an important food material in our table, in our dining table. That's why it is called table salt. However, the table salt is not pure sodium chloride. जब हम टेबल साल्ट यूज करते हैं ना, जब साल्ट यूज करते हैं घर पे, वो प्योर NaCl नहीं होता. इट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड ऑल्सो. फॉर्मूला क्या है? Ki, पोटेशियम आयोडाइड Ki. कितना यूज करते हैं? इट इज somewhat more than 15 ppm. What is ppm here? Parts per million. Parts per million. मोर देन 15 ppm यूज करते हैं हम उसमें पोटेशियम आयोडाइड भी. उसका मेन काम क्या है? द मेन रोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इन द साल्ट यूज्ड एट आवर होम, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थायराइड डिसऑर्डर लाइक गॉइटर. तो हम गॉइटर से हमें बचाता है दिस पोटेशियम आयोडाइड, द आयोडीन प्रेजेंट इन द साल्ट एट आवर होम. Now the laboratory preparation of common salt. How can we prepare common salt at the laboratories? By the reaction of sodium hydroxide with hydrochloric acid. Write the reaction. Sodium hydroxide NaOH aqueous. Hydrochloric acid HCl aqueous. क्या बनाएगा? NaCl aqueous plus water liquid. So the common salt obtained in this reaction is water soluble. तो हम इसको वाटर से अलग कैसे करेंगे? The sodium chloride solution obtained can be evaporated. The process of evaporation to obtain the pure sodium chloride. ठीक है बेटा? So that's how you can obtain the sodium chloride in our laboratories. So that's about the laboratory preparation of common salt. तो पेन कॉपी निकाल लो. Start making your own notes based upon the common salt. Now we'll discuss about the occurrence and extraction of common salt, then properties and uses of common salt. तब तक आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो इसको. Now we'll discuss the occurrence and extraction, properties and uses of common salt. Yes, now the occurrence and extraction of common salt. How can we extract common salt from the various methods available to us? Methods such as from sea water. तो हम sea water को evaporate कर सकते हैं to get common salt. Because sea water contains large amount of common salt. और ये इंडिया में हम कहां पे कर रहे हैं? मुंबई और चेन्नई में. फ्रॉम रॉक सॉल्ट. रॉक सॉल्ट क्या है? एक मिनरल है ये. और ये कहां पे बनता है? कैसे बनता है? फॉर्म्ड फ्रॉम ड्राइड अप सीज ऑफ वेरी ओल्डन टाइम्स. हमारे वो सीज जो ड्राई हो चुके हैं, जो पहले ओल्डन टाइम्स में वहां पे थे, अब वहां पे नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो मंडी में बहुत बड़ी खान है, माइंस है. माइंस क्या होता है? खान. माइंस.
तो मंडी माइंस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मोस्ट फेमस फॉर रॉक सॉल्ट। खेवरा ऑफ पंजाब, खेवरा पंजाब में है। कौन सा पंजाब? जो फिलहाल पाकिस्तान में है। वहां पर भी बहुत बड़ी खान है, वन ऑफ द लार्जेस्ट माइंस ऑफ रॉक सॉल्ट। फ्रॉम इनलैंड लेक्स, इनलैंड लेक्स क्या होते हैं? द लेक्स विच आर इन द इंटीरियर ऑफ एनी स्टेट और कंट्री। और ये कैसे कर रहे हैं हम इनलैंड लेक्स से? वही सेम प्रोसेस है, बाय इवापोरेशन ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल सांबर लेक, सांबर लेक कहां पे? राजस्थान में। और सांबर लेक का पानी बहुत ही खारा है। कहां पे सांबर लेक? ये जयपुर और अजमेर के बीच में आता है बेटे ये। सो वी कैन इवापोरेट द वाटर ऑफ सांबर लेक टू गेट कॉमन सॉल्ट। सिमिलरली ग्रेट साल्ट लेक ऑफ यूएसए, उसका पानी भी बहुत खारा है। सो वी कैन इवापोरेट ग्रेट साल्ट लेक टू गेट आवर सोर्स फॉर कॉमन सॉल्ट। So the common salt obtained from all these sources, they are not pure, उसमें impurity होती है, क्योंकि सीज में सिर्फ कॉमन सॉल्ट नहीं है, लेक में सिर्फ कॉमन सॉल्ट नहीं है, इन लेक्स में उसमें बाकी कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं ना, तो उसको हम प्यूरिफाई करते हैं। द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड, द कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड टू गेट प्योर कॉमन सॉल्ट। सो दैट्स अबाउट द ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉमन सॉल्ट। इसको नोट कर लो बेटे। Now we'll discuss about the properties and uses of common salt. Yes, now let's discuss about the properties of common salt. First क्या है? It is colorless crystalline solid. Colorless है और crystalline के फॉर्म में होता है ये। And what the melting point of NaCl? It is 801 degree Celsius. Second, it is soluble in water. हमें पता है common salt water में soluble है in all proportions. It is hygroscopic. अब ये क्या होता है? The tendency of a substance to absorb moisture from air. तो ये इसमें नमी आ जाती है, ये वाटर को मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है from air and it becomes wet. It reacts with concentrated sulfuric acid to produce which gas? Hydrogen chloride gas. Write the reaction. NaCl प्लस में H2SO4 किस फॉर्म में है ये? कंसेंट्रेटेड। We have formation of sodium hydrogen sulfate plus HCl in the gaseous form. The upper arrow shows evolution of the gas. Which gas? HCl gas. तो ये हो गए some of the important properties of common salt. अब आते हैं uses of common salt में। First क्या है? It is used as essential constituent of diet. So it is used in cooking food. It adds flavor. It adds flavor in the food. Second, as a preservative for packed food material. What is preservative? Which can preserve food for a longer period of time. So it can preserve food also, mainly fish. इस केस में क्या होता है? Due to osmosis, the bacteria loses water and they die. That's how NaCl preserve food, mainly fish. In the manufacture of soaps, तो साबुन बनाने में भी NaCl हम यूज करते हैं। As a raw material for making large number of other chemicals such as caustic soda, baking soda, washing soda, hydrochloric acid, etc. So these are some of the important uses of common salt, sodium chloride. So that's about this lecture. The lecture based upon common salt, sodium chloride. So we discussed in this lecture mainly about introduction of NaCl, laboratory preparation of NaCl, occurrence and extraction of NaCl, properties and uses of NaCl, that is common salt. In the next lecture, we will start some of the important chemicals produced from common salt, that is this caustic soda,
baking soda, washing soda, and so on. So see you all in the next lecture. Till then, thank you. और आप सबको मेरा नमस्ते.